Good morning everyone, this is Jyoti Gautam, your science teacher, and today we'll be starting with a new topic, acids, bases and salts. Now you have come across so many materials, so many liquids in your day-to-day life, in your daily cuisines, daily meals, which taste so differently. Some have a significant sour taste, some are bitter in taste. Even they touch so differently. Some can burn your skin. They are, they causes rashes on your skin. They are harsh on your skin. On the other hand, some are having the soapy appearance. So on the basis of their properties, on the basis of the taste, we have classified our materials, the liquids, the food items into three main categories: the acidic material, the basic and the salt materials. So moving on to the acids, acids are the material which taste sour. Acids क्या होते हैं? वो material जिनका taste कैसा होता है? खट्टा होता है, sour होता है. Acid is derived from a Latin word acer, A-C-E-R-E. Acid is derived from a Latin word acer. Acer means sour. Acids produces hydrogen ion. Acids क्या करते हैं? H plus ion release करते हैं when they get dissociated. अब you must be you must be puzzled कि मैम ये H plus ion क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है. Okay, let us understand this by taking an example. Let's take example of an acid HCl. ठीक है, HCl क्या होता है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब ये डिसोसिएट होता है, when it gets dissociated, when it gets break down, ये किस में टूटता है? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में. ठीक है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है? बिकॉज H के ऊपर प्लस चार्ज है, बिकॉज H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? क्लोरीन को. एंड क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है. क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया है? हाइड्रोजन से लिया है. ओके, वेन एवर दिस इज अगेन आयन फॉर्म्स. ये क्या है? आयन फॉर्म्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन. सो acid always dissociates to produce hydrogen ions. Now, acids they turn blue litmus to red. It is again a property of acid to show different reactions with different indicators. When it comes to the litmus paper, acid turn blue litmus into the red one. We'll be discussing about the litmus paper and indicators in detail in our further slides. Okay. Then acids are corrosive in nature. Yes, acids जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनका नेचर, बेसिक नेचर क्या होता है? corrosive होता है. रस्टिंग उनमें हो जाती है. They promote rusting. Acid rain. Yes, acid rain क्या कॉन्सेप्ट है? Acid rain is a concept which you have must observed, even read in newspapers, कि what will happen? The marble cancer, आपने एक वर्ड सुना होगा, marble cancer. मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर है येलोइंग ऑफ ताजमहल. जो हमारा ताजमहल है आगरा में, उसका जो मार्बल है, वाइट मार्बल, वो कैसा होता जा रहा है? डे बाय डे येलो होता जा रहा है. और वो क्यों येलो होता जा रहा है? बिकॉज of the extreme pollutants released by the refinery in Mathura. The Taj Mahal which is present in Agra, it's getting corroded. और वो क्या हो रहा है? डे बाई डे उसके जो कलर है डिसकलर होता जा रहा है. जो वाइट कलर का मार्बल, इट इज़ डे बाई डे गेटिंग येलोइंग. सो दैट बिकम्स मार्बल कैंसर. और उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है एसिड रेन. नाउ एसिड रेन होती क्या है? Whenever the water droplets present in the atmosphere, they get combined with the pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, even the carbon dioxide. They form acid. जब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3. ओके, so the acids they even responsible for the acid rain and discoloration of different monuments. Now the next property of acid is acids have a pH less than 7. Yes, इनका pH कितना होता है? Less than 7. Now pH and pH scale, we have a pH scale in which we have number from 1 to 14, and in the center we have 7. So all the material, those who are having pH less than 7, they are acidic in nature, and those who are having pH number more than 7, they are basic in nature.
and the material those lie on the 7 pH they are neutral. जिनका pH 7 होता है वो कैसे होता है? न्यूट्रल, जैसे कि आपका वाटर. 7 से कम pH किसकी प्रॉपर्टी होती है? एसिड्स की. 7 से ज़्यादा किसकी होती है? बेसिस की. ओके. नाउ there is one question which arises in my mind for you all, that lemon, tamarind, salt, sugar, vinegar, pineapple, oranges, do they all taste same? No, they don't taste same. Why so? Because they all have different properties, and those properties decide whether they will be acid, basis or salt. Okay. Now we are surrounded with so many different materials and liquids which have some or the other acids in them, and that to the natural acids. These are all what? Natural acids. Natural acids. Okay, so natural acids are acids which are present in nature. Nobody have ever invented them. किसी ने इनको कभी invent नहीं किया. They are natural. For example, vinegar. Vinegar, your acetic acid. Vinegar क्या होता है आपका? Acetic acid. Acetic acid, it is present in pickles. Okay, it is present in pickles. It's a very good preservative. Vinegar being an acid, being a very strong acid, won't allow the more development of microorganism in the pickles. So it acts as a preservative and even used in making different dishes and cuisines. So vinegar is an acid. Lemon juice, orange juice, even they have acid. Apple juices, tamarind, amla, Indian gooseberry, your curd, black tea, unripe mango, grapes, pineapple, even your spinach, okay, tomatoes, they all have some or the other acids in them. Now one more question for you all. Like, if we talk about vinegar, lemon juice and all these, they all have acid, then why does they all taste differently? The black tea tastes different. Even the lemon juice and orange juice, being juices, they taste different. इनका भी taste अलग होता है. अगर मैं grapes का taste देखती हूँ तो वो भी अलग होता है. Curd tastes different too. So if they all have acids in them, then why do they taste differently? The simple answer is they all do have acids, but different acids in them. We have so many different types of naturally occurring acid present in an environment, and because of the difference in the type of acids, they taste differently. Now acids, it's all about acids. The curd, lemon juices, orange juices, vinegar, they all taste sour. In सबका taste कैसा होता है? खट्टा होता है. And these substances, they taste sour because they contain acid, and the chemical nature of these substances acidic. इनका chemical nature कैसा होता है? Acidic होता है. मतलब इनका जो pH होगा वो कितना होगा? 7 से कम होगा. The word acid comes from a Latin word acer, which means sour. This I have already mentioned in my first slide. And the acid in these substances are natural acid. Yes, the above mentioned substances, they all contain the natural acid which are present in nature in its original form. Now here comes the interesting part, the different types of acids. Yes, hydrochloric acid, it is present in your stomach. Okay, it is present, it's a stomach acid, it's present inside the stomach. अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर मैम हमारे स्टमक में एसिड है तो फिर वो जलता क्यों नहीं है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यस, जलता भी है. कैसे? सी, whenever you eat some spicy food or the oily food, that acid present in your stomach, it's get aggravated and you feel acidity. हमने वो word पढ़ते हैं ना, acidity हो रही है. Then we take some pills, some basic pills to neutralize that acid. So our stomach contain hydrochloric acid जिसका pH कितना होता है? 2 to 3. That means it's a very strong acid which is present in our stomach. But what protects our stomach from getting hurt? The mucous lining. Our stomach have a special lining of mucal cell, mucosa, which protects our stomach from getting that from protecting it protects our stomach from the adverse effect of this acid. Now hydrochloric acid is HCl. Okay, then comes the sulfuric acid. Sulfuric acid होता है बच्चा हमारा H2SO4.
ओके, H का मतलब है हाइड्रोजन, S मतलब सल्फर एंड O मतलब ऑक्सीजन, H2SO4. This sulfuric acid is present in the car batteries. Yes, and the nitric acid which is HNO3. HNO3. Nitric acid is present in the explosives, the dynamite, जितने भी जो bombs and all explosives होते हैं उनमें कौन सा हम acid use करते हैं? Nitric acid. Then the vinegar, this I have already mentioned, contains acetic acid, and yes, the carbonated, your favorite carbonated drinks, they do contain acids. इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा cold drink पीना is not good for stomach, not good for health. Why so? Because stomach में तो already acid, and after consuming a lot of carbonated drink, you're adding more and more acid in your body. So ये जो आपकी cold drinks होती हैं, Coca-Colas, Pepsis and all, they all contain carbonic acid. Then the flaring common acid is phosphoric acid. Ant sting, yes, ant की जो sting होती है, हनी बी की जो sting होती है, उसमें क्या होता है आपका फॉर्मिक एसिड होता है, HCOH, फॉर्मिक एसिड होता है. फॉर्मिक एसिड क्या आपका बेसिकली जब भी चींटी काटती है तो उस पूरे पोर्शन में रेडनेस हो आती है, स्वेलिंग जैसी हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे जलन होती है. दैट जलन इज बिकॉज ऑफ दैट एसिड, फॉर्मिक एसिड. देन कम्स आवर फेवरेट फ्रूट्स लेमन एंड ऑरेंजेस. वो लेमन एंड ऑरेंजेस का जो सावर सा खट्टा सा जो टेस्ट है दैट इज बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. देन योर कर्ड, कर्ड कंटेन्स द लैक्टिक एसिड. मिल्क कंटेन्स लैक्टोज. मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज शुगर होता है. व्हेन द मिल्क सेटल अप्स एंड कर्डल्स इट्स लैक्टोज गेट्स कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड. जब मिल्क की कर्डलिंग हो आती है तो जो लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में. स्पिनचेस एंड टोमेटोज दे कंटेन ऑक्सैलिक एसिड. जो स्पिनचेस, पालक और टमाटर होता है उसमें क्या होता है आपका? ऑक्सैलिक एसिड. देन द आंवला, इंडियन गूसबेरी एंड अदर सिट्रस फ्रूट दे कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड. जितने बाकी अदर आपके सिट्रस फ्रूट्स उनमें क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड. देन द टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज दे कंटेन टार्ट्रिक एसिड. Pineapple contain what? That's your homework. You need to find out that pineapple contains which acids, or the apple juice or apple contain which acid. Apple and pineapple में कौन सा acid होता है? This is your homework. It's a different acid and yet a natural acid, so you all need to find it out and just mention the name in your classwork copy and also answer in the comment box. Now we are having two categories of acids. The first one is the organic acid and the second one is the mineral acid. Yes, organic acids are acids which occur naturally in nature. Natural acids होते हैं, nobody have ever invented them. They present in the nature in their original form. On the other hand, the mineral acids कौन से होते हैं? These are the acids that are prepared from the minerals present in the earth crust or minerals present in the earth. ठीक है. देन द ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल हमने अभी पढ़े हैं. जितने भी जो हमारे नेचुरल फ्रूट एसिड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन लेमन, टैमरिंड, इवन मिल्क, कर्ड, they are organic acid like citric acid, tartric acid, lactic acid. These are the organic acid. On the other hand, the acids which are present in our stomach like HCl, nitric acid, sulfuric acid which causes the acid rain, they are all mineral acids. Okay. Then comes the bases. Now, have you ever tasted the Digen or the Gelusil? Whenever we feel acidity or whenever we feel like our stomach is burning, our mother gave us a solution, a pink color solution which named Digen. उसका टेस्ट कैसा होता है? Some bittery taste होता है, right? So that substance which tastes bitter, be it Gelusil, be it any other base, they are known as bases. That Gelusil or Digen is basic in nature. So what will happen when we consume Digen? That burning sensation of our stomach cools down because that base, it reacts with acid and neutralizes it. So bases are, if I talk about the properties, they are bitter in taste. थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है उनका. येस, दे हैव अ सोपी टच. टच कैसे होता है? सोपी टच होता है, चिकना चिकना टेस्ट टच होता है इनका. बेसिस आर वाटर सॉल्यूबल कॉल्ड एल्कलाइज. बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइज भी बोलते हैं. एंड ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज. येस, डू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. वाटर सॉल्यूबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं.
जितने भी एल्केलाइज हैं वो सारे बेसिस होते हैं, बट सारे बेसिस एल्केलाइज नहीं होते हैं. मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे बेसिस हमारे वाटर सॉल्युबल हों. सम बेसिस आर वाटर इनसॉल्युबल एज वेल. If I talk about the reaction of bases with different indicators, when it comes to the litmus paper, the base turn red litmus to blue. बेस क्या करते हैं, जो हमारा रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में चेंज कर देंगे. दिस आई हैव ऑलरेडी मैंशनड. द बेस हैव अ ग्रेटर पीएच देन 7. एसिड्स का पीएच हमारा लेस देन 7 था, 7 से कम था. और बेसिस का पीएच कितना है हमारा, इट इज़ मोर देन 7. Then example of some of the common bases are detergents. Be it of any brand are detergents. They are a wonderful example of bases, and they do show their effect whenever we add different chemicals on them. We can easily test whether a detergent is basic or not by even using a turmeric, which also acts as an indicator. So that's gonna be a fun activity. So we'll be discussing how turmeric react with detergent, how it acts as an indicator in our next lecture. So baking soda, the dry cleaners, antacid bases. Antacids क्या होते हैं? Antacids again that gelycol or diazine. Antacids made up of two words, anta and acid. Anta means opposite. So the substance which have an opposite effect that of the acid is known as base, antacids. Okay, then the ammonia soaps, hand washes and dishwashers. Then the lime water, milk of magnesia. Milk of magnesia is again used in MgOH, again used in your making gelycils and diagenes. That used in making antacids and medicines for reducing the harsh effect of acids. Then baking soda taste sour. Does baking soda taste sour? No. क्या baking soda जो हम which we use for making our cakes and pastries and all muffins and all baked items, does it taste sour? क्या उसका taste खट्टा होता है? No. It tastes whenever we dissolve baking soda, it touch like a slippery सा उसका soapy सा touch होता है and it tastes bitter. So what does it say? It does not taste sour. That it means it is not a acid. अगर उसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो मतलब क्या है कि वो एसिड नहीं है. उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है. If you rub the solution between the finger, it feels soapy on touching and hence it is a base. So substance which have these properties, especially when they taste bitter and have a soapy appearance, soapy touch, they are known as basic substances. Now, some of the common bases present in our environment. Sodium hydroxide. Hydroxide, yes. I would like to mention one more point in bases. Like we studied in acids, the acid they form H plus ions. Acids क्या बनाते हैं? H plus ions. Similarly, the bases they form hydroxide ions, OH ions. Base क्या बनाते हैं? OH ions बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? Let's see. This example of sodium hydroxide. Sodium hydroxide क्या होता है? NaOH. So whenever this NaOH get dissociated, जब भी टूटेगा तो क्या बनाएगा? Na positive and OH negative. So this OH negative is known as hydroxide ion. Okay. So sodium positive and OH negative ion. So bases की main एक और property होती है कि वो किस में dissociate होते हैं? OH negative ions में. Okay. So sodium hydroxide is a strong base which is found in soaps and drain cleaners. All the soaps, almost all soaps, they are some or the other derivatives of sodium hydroxide. They contain sodium NaOH. Then the magnesium hydroxide, MgOH twice, they are present in antacid, use at medicine. हम उसको किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं. Aluminium hydroxide, they use in deodorants and antacids. Then calcium hydroxide, CaOH whole twice. ये भी हम किस में यूज़ करते हैं? CaOH whole twice. ये किस में यूज़ करते हैं? हमारा एज अ लाइम वाटर. Then ammonium hydroxide is used for cleaning the window panes, the window cleaner. Ammonium hydroxide आपने देखा होगा जो लैपटॉप के साथ एक लैपटॉप की जो क्लीनर आता है, छोटी सी बॉटल आती है, उस पर लिखा भी होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. तो वो हम विंडो क्लीनर के तौर पे उसको यूज़ करते हैं अपनी कार की विंडो क्लीन करने के लिए, विंडो पैन्स को क्लीन करने के लिए, लैपटॉप की विंडोज़ को क्लीन करने के लिए. देन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, it's a milk of magnesia. Then the ammonium hydroxide, ammonia
is a common base. Ammonia क्या होता है? It's a very common base. Then we have again a category of weak and strong bases. Likewise we have weak and strong acids as well. हमारे पास weak और strong acids भी हैं. Some acids they are very strong acids. उनका जो effect होता है वो ज़्यादा strong होता है, और कुछ acids होते हैं वो होते तो acidic nature में but they are not that much harsh. ठीक है, and it depends whether the acid is weak or strong. It depends on their pH. क्योंकि कितनी जल्दी कितना उनका कम pH है उस पर डिपेंड करते हैं, प्लस वो कितना easily dissociate हो पाते हैं. Now here are some of the common examples of weak and strong bases. In weak we have potassium carbonate, sodium carbonate and ammonia. Ammonia is a normal weak base. Whenever we combine ammonia with water or other thing, we can have a different alternative of ammonia. Now strong bases NaOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, that is KOH. KOH is again a strong base. Sodium phosphate, barium hydroxide and calcium hydroxide. These are some of the strong bases. Now here is a picture which contains some common household acids and bases. Like in this picture you can easily see contains a lemon juice. Lemon juice is again acidic in nature. Okay, then the vinegar is acidic in nature. Bases, your like this is the baking soda. Just a second. This is the baking soda, this is the window cleaner, and this one is your easy or the detergents, the liquid soap, the liquid detergent. So these are the bases and these are the acids. Now just a second. Yes. Now here is the pH scale. I have mentioned that in this pH scale we have numbering from 0 to 14, and in the center we have a number 7. Material which have 7 pH are called neutral. इनको हम क्या बोलते हैं? Neutral. That means neutral means they are neither acidic nor basic. ना तो वो acids होते हैं ना तो वो base होते हैं. They share common properties. That means बहुत कोई significant taste नहीं होता उनका, ना तो वो neither they are sour in taste nor they are bitter in taste nor they are harsh on skin nor they touch soapy. So they are neutral substances like pure water. जो pure water होता है, distilled water होता है, वो क्या होता है आपका? Neutral होता है. Even जो salts होते हैं, they are even more or less neutral. Okay, then is just a second. Yeah, then is acids. Acids are substance which have pH less than 7. उनको हम generally red से indicate करते हैं. Why so? क्योंकि acids का मतलब होता है कि it causes burn, वो जला देता है acid. So acid का ख्याल आते दिमाग में सबसे पहले कौन सा कलर hit करता है? Red color. Then the acid is like even the stomach contain hydrochloric acid. I have mentioned उसका pH कितना होता है? 2 to 3 होता है. स्टमक में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, स्टमक एसिड, उसका pH बहुत कम होता है. Then the lemon have a strong acid, citric acid. Grapes, even the tomatoes contain oxalic acid. Even banana, milk, they contain acid. But the lactic acid which is present in milk is a weak acid. अगर हम बात करते हैं lactic acid की, if we compare, just a second, yeah, if we compare lactic acid with HCl, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है, तो यू कैन ईजिली से कि यस मैम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीइंग हैविंग अ वेरी लेस पीएच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑन द अदर हैंड द लैक्टिक एसिड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. अगर हम लैक्टिक एसिड से सिट्रिक एसिड को भी कंपेयर करें तब भी सिट्रिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लैक्टिक एसिड कम स्ट्रॉन्ग है. कैसे? यू कैन ईजिली एनालाइज कि जब हम नींबू खाते हैं तो वी फील वो ज़्यादा खट्टा, वो वी फील मोर सावरी टेस्ट, वो ज़्यादा सावरी टेस्ट, ज़्यादा खट्टा टेस्ट फील होता है. बट वेन एवर वी हैव कर्ड, जब हम कर्ड खा रहे हैं, फ्रेश कर्ड खा रहे हैं, तो वो इतनी खट्टी नहीं होती है. येस, लेकिन अगर वो काफ़ी दिन पुरानी, देन इट डेफिनेटली हैव द मोर एसिडिक कंटेंट, बिकम्स द pH reduces to a significant level. Then comes the bases. I'll show it with blue. Yes, the bases, they have pH more than 7. The egg contained bases, the baking soda which is used in making the cakes and the other baking stuffs, biscuits and all. So baking soda is a base. Then soap, ammonia,
bleach, oven cleaner or other window pan cleaners, your sodium hydroxide solutions, liquid detergents, they all are having base. Now baking soda and sodium hydroxide, if we compare, अगर मैं baking soda को, just a second, if I compare baking soda with sodium hydroxide, then sodium hydroxide is obviously a strong base as compared to baking soda. Okay, and even the bleach is a strong base as compared to the baking soda. So I hope this concept of acid, bases and salt is clear to you. We'll be coming with a further more lectures on the different types of indicators, what are salts, how the acids and base react to form neutral salts and releases water, what is the process of neutralization in a further lecture. Till then, if you have any query, you can pose your questions and doubts. Thank you so much.